my dear students and my dear colleagues. Welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. Dear, आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कुलीग्स को या स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी. They were facing this problem. Which problem? Unicode error. Yes, students, when you go for practicals or you do your project work, then you have to connect CSV and your Python code. Then you sometimes you encounter such kind of error. How it can be removed? इसको आप कैसे fix करेंगे? I'm going to tell you. I'll be showing you only just three alternative ways in which you can remove this error completely. It is very simple, student. और error किस step से आती है? The error is like syntax error, Unicode error, codec cannot decode the bytes in position 2 to 3, truncated and so on, like this. Okay, so I'll show you practically only. So see here, I've used this this Excel. This is a CSV file cars by the name cars, and I've given the full path here. Just 3-line coding is here just to show you practically how you can remove, how you can fix up this error. I've just given the import statement and df is equal to p.read csv, and I've given the full path of this cars.csv file. Okay, fine, and print df. So let me run this part of this code. See here. Unicode error. Unicode codec cannot decode bytes in position 2 to 3, truncated and so on, escape, etc. Okay, this is the problem with you which you are facing. So this is the first solution. I'll be giving you 3 solutions. Alternatively, आप किसी को भी use कर सकते हैं. See, इसके अंदर मैंने I've added this only R. ये प्रॉब्लम आती क्यों है? Why does this occur? Because इसे में हम जो है ये string की तरह ले रहे हैं हमारे path को. ठीक है, it is taking as a string. तो हम यहाँ पर जस्ट यू हैव टू ऐड दिस पार्ट. दिस आपको यहाँ पर आर मैंने ऐड किया. इसके अंदर रेस्ट ऑफ द कोडिंग ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स इज सेम. चलिए मैं आपको रन करके शो करती हूँ. सी हियर, ये आपके सामने पूरा यहाँ पे कार्ड, प्राइस, एवरीथिंग, ऑल द कंटेंट्स आर हियर. आई कैन शो यू द CSV फाइल. सी, दिस इज द CSV फाइल हियर. द नेम इज हियर कार्स एंड it was saved as .csv. Okay, see here, cars and the price is given here, and when I'm running this code and when I'm reading this file, read CSV, see all the detail is given here. 1 2 3 4 5 6 7 and all things. I can show you once again just by writing only R, adding R just before the codes, no space, nothing. Okay, now let's try the second code. Okay, first I'll show you again. Now again it will show you an error. See, again error is there. I'll show you next solution is, इसमें आपको क्या करना है students? You have to just replace this. Otherwise we used to give like this slash हम लोग देते थे यहाँ पर. I give here R. अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप बैकस्लैश भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बैकस्लैश यूज करेंगे तो भी आपका रन होना चाहिए. I'll show you. See here, again it is running. ठीक है, is it clear? हमने इसके अंदर हमने क्या किया है? Instead of giving the backslash, just give slash here. Okay, and now the third one. फिर आपको अगेन मैं रॉन्ग वाला आपको दिखाती हूँ. इसमें मैंने किया, इसमें अगेन विल शो एरर आ रही है. अब थर्ड ऑल्टरनेटिव आपके सामने जो है ये वाला पार्ट, इसमें मैंने क्या यूज किया? आई हैव यूज्ड डबल स्लैश. यस स्टूडेंट, दैट इज द ओनली change I have done in this statement. See here again. So very simple, and it is a sure short solution for you. I hope you will get rid of this problem for always. Okay, and keep watching my videos on the channel Brilliant Minds by Neeru. All the best.